Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you're watching Question Hour. This show focuses on questions raised by the members in both houses of parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha today, members from various parties posed questions related to 10 ministries and sought responses from their respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha, members from various parties raised questions related to 19 ministries and sought responses from the respective ministers. Now, let's take a look at some of the questions for today. Member KRN Rajesh Kumar asked the Minister of Road Transport and Highways whether government is considering large-scale usage of bio-bitumen instead of fossil fuel-based bitumen for road construction in the country, and whether the government has any plans to introduce a PLI scheme for bio-bitumen production. We are the largest road network in the world. 90% of roads we are using bituminous layer, and bituminous consumption in 23-24 was 88 lakh ton. 24-25 it is expected 100 lakh ton. Total we need to import 50% of the bitumen is import, and annual import cost is 25,000 to 30,000 crore. Sir, it is the great thing that today in our country, because of the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our farmers are now not only Annadata, they are Urja Data. Not only Urja Data, they are bitumen data. Not only bitumen data, they are now Hawaii Indian data. So this is a drastic change in the policy of the government, sir. The bio-bitumen is CRRI and Indian Institute of Petroleum Dehradun had developed bio-bitumen from parali, that is rice straw. And because of burning of parali, sir, we are facing air pollution problem in Delhi. Sir, 1 ton of parali is giving 30% of bio-bitumen, 350 kg of biogas and 350 kg of biochar. Sir, 35% substitution, the bio-bitumen into bitumen is successful. The forest saving is approximately, it comes to 10,000 crore, and patent is already submitted. And the petroleum-based bitumen cost is 50 rupees per kg, and bio-bitumen from biomass, that is parali, coming to 40 rupees per kg. Sir, it's a good thing, sir. There are two technology available. Adarniya, respectable Hardeep Puri ji is not here, but I am giving special thanks to him and Indian Oil Chairman. Sir, they have a project in Panipat making a 1 lakh liter of ethanol per day from parali, rice straw. The second product is 150 ton of bio-bitumen per day. And the third product is 88,000 ton per year bio-aviation fuel, sustainable aviation fuel. That is to be a great thing in the history of the world, sir, and the project is completed. Sir, I want to request honorable all members. Sir, we have a parali burning problem is creating pollution in the country. And now we have got 450 projects where we are converting parali into bio-CNG. And we are getting the project is lignin. Sir, now my department is going to issue a notification order by which this lignin we can use in petroleum bitumen up to 35%. We have 450 projects where in Haryana, Punjab, Western UP, they are converting their biomass parali into bio-CNG and now getting lignin. And now we are ready to purchase that. We are issuing the order. So it is going to not only saving our imports, but it is going to resolve the problem of air pollution. At the same time, it is useful for the farmer. Lok Sabha MP Raju Bista asked the Department of Space the status of India's NAVIC system and the manner in which it is different from contemporary systems vis-a-vis GPS, GLONASS, and the impact ISRO and Earth observation satellites on various sectors such as agriculture, disaster management, and environmental monitoring. The ministry, in its reply, informed the House that India's NAVIC is an independent regional navigation satellite system designed to provide PNT, position,
navigation and timing service over Indian landmass and 1500 kilometers beyond. Navik space segment consists of a constellation of 7 satellites in geosynchronous orbits. Currently, there are 4 functional satellites providing PNT service. The satellites that are no longer capable of PNT service have been repurposed for additional useful services like safety of life messaging. The full constellation of 7 satellites is expected to be completed in the coming years. The House was also informed that Navik is a regional system, whereas GPS and GLONASS are global systems. However, the performance of Navik, as seen with a 7-satellite constellation, is at par with the contemporary systems in the envisaged service area. The ministry also informed that ISRO's Earth observation satellites provide data for applications in the domains of agriculture, water, environment, urban and rural development, and for disaster management support, which have been institutionalized by the respective users. In the agriculture domain, EO data has facilitated advanced information on yield of major crops and in assessing and monitoring agriculture drought situations. The EO data is also being used in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana program, benefiting farmers and agricultural insurance companies. EO data is also used in disaster management support to drive near real-time information, development of early warning models, and damage assessment with reference to disasters such as floods, forest fires, cyclones, landslides, and earthquakes. Such inputs help in decision-making for disaster response, planning long-term mitigation measures, and also in reducing the loss of lives. And extent and cost of evacuation operations for major disasters such as cyclones and floods. EO data is also providing information on aerosols, agricultural residue burning, and weather parameters for environmental monitoring and citizens' benefit. All these applications provide tangible and intangible contributions for societal development. Member Vikramjit Singh Sahni asked Minister of Education whether government is aware that the fees of some private educational institutions, especially in cities, right from nursery to post-graduation, is very expensive, and whether government is planning to bring some fee regulation law on private schools and colleges and rationalize it for institutions and citizens both. चेयरमैन साहब, जब विक्रमजीत जी खुद एजुकेशन में बहुत इनका बड़ा योगदान है और इनके नाम से जब प्रश्न आया फी नियंत्रण को लेकर, तो मुझे थोड़ी आशंका हुई कि इन्होंने इनके आजू बाजू बैठते हैं माननीय सदस्य, उनसे पूछा है कि नहीं। इन्होंने आरटीई की बात की है सर, और मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा 2009 से एक कानून सदन ने पारित किया है और अधिकार दिया है, गरीब बच्चों का ख्याल हमें रखना है, सरकार की प्राथमिकता है। और विभिन्न तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्योंकि वो एक समावेशी योजना है, जो लोग वंचित रह गए, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए किसी कारण, उनको भी वापस लाने का प्रावधान है। और समग्र शिक्षा में हम क्योंकि एक्सेस देना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, बाल वाटिका की 3 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, उसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है सर। आरटीई का विशेष इन्होंने पूछा, जो उन्होंने डेटा मांगा है कि कितना क्रियान्वयन हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सरकार पंजाब में है और इनकी बड़ी जिम्मेदारी दल में भी प्रयास करें, राज्य सरकार से प्रयास करें, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2 टूक मना कर दिया। आज इनकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस भी रही है सरकार में। पंजाब ने 2 टूक मना कर दिया कि हम आरटीई को जो 25% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में कोटा है गरीब बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि हम प्रावधान नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर्याप्त है सरकारी स्कूल। तो मेरा निवेदन होगा, साथ साथ और भी राज्य सर, केरल ने नहीं लागू किया, तेलंगाना ने लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया। तो आज सदन में मैं अपील करना चाहता हूँ सर, ताकि कोई भी जो लाभार्थी है, जिस उद्देश्य से ये कानून बना है, जो अधिकार है, कोई भी उससे वंचित न रह पाए। Rajya Sabha member
Jawahar Sarkar asked the Minister of Education the government's views and policy towards educational technology companies that charge huge amounts and profiteer at the expense of poor and middle-class families. What is the way out, and whether government could step in to offer standard digital tutorials and coaching materials through its vast educational resources, and whether government and aided institutions could propagate digital tutorials in multiple languages with the aid of artificial intelligence. The ministry, in its reply, informed the House of collaborations with All India Council of Technical Education to initiate the National Education Alliance for Technology on public-private partnership model to bring the popular educational technological products on a single platform for the convenience of learners. Any student belonging to the economically and socially weaker sections across the country can avail benefit from NEET, as 25% of the coupons are provisioned for them free of cost. The ministry further informed that the National Education Policy 2020 places strong emphasis on the fusion of technology with education, particularly in the context of preserving and promoting the nation's diverse linguistic heritage and diversity. In order to achieve the objectives of NEP 2020, steps have been taken to ensure access and affordability of high-quality educational content. The Sathi self-assessment, test and help for entrance examination portal, designed in collaboration with the Department of Higher Education and IIT Kanpur to provide equal access to quality education for competitive examinations such as JEE, NEET, SSC and others for students from across the country. The platform provides free educational content and guidance for competitive examinations to all student learners, including those of the economically and socially weaker sections. The content is curated by the academicians from prestigious institutions such as Indian Institutes of Technology and All India Institute of Medical Sciences, contributing their expertise to help student learners to prepare for competitive exams. To date, over 4 lakh student learners have been registered on the portal. The platform provides facilities such as Solve With Me, an assessment platform with more than 60,000 questions, NCERT, video solutions, live classes and NCERT-based learning, etc. AI-based tools, chatbot have been integrated to offer valuable insights into effective exam preparation strategies. Feedback mechanism is supported with AI integration. The content related to JEE, NEET, SSC and others are also broadcasted on the DTH platform. The student learner can also access content through web portal and mobile application. Member Devu Singh Chauhan and Janardhan Singh Sigriwal asked Minister of New and Renewable Energy the steps undertaken by the government to realize the commitment of 500 gigawatt non-fossil energy capacity by 2030 and the steps undertaken to generate hydrogen fuel and increase its adoption. महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने आज इधर उठाया है। जैसे उन्होंने कहा है, एक तो मैं स्वीकार करता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उधर के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से लेके गुजरात इसमें अग्रेसर है। दे आर नंबर 1 एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड, एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न्ड सर। तो लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है। 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है। एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014, टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए
हमने अभी जैसे मैंने बताया सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था। आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। तो आगे बढ़ने के लिए हम अंडर द प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप the several reforms have been unleashed in this sector. Today we have achieved more than 200 gigawatt installed capacity, as I have said. Another 151.22 gigawatt is under the various stages of implementation, and 76.42 gigawatt is tendered, sir. So that overall 430 gigawatt is already in the pipeline. And रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है सेकी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एचजेवीएन है, ये सबको हर बरस 50 गीगावाट पर एनम रिन्यूएबल एनर्जी पावर बिड को बुलाने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं। एफडीआई 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलो किया है और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो ये मैंडेटरी बना दिया है। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार हैज वेव्ड द इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट करने के लिए जो चार्जेस था वो चार्जेस भी रिन्यूएबल के लिए वे ऑफ कर दिया है। बहुत बड़ा स्टेप्स माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है। उसके साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये भी हमने शुरू कर दिया है। कुछ टेंडर्स अवार्ड हो गए हैं। उसके साथ ही साथ ऑफशोर विंड एनर्जी में भी वायबिलिटी गैप फंडिंग का काम शुरू हो गया सर। Member Brij Mohan Agrawal asked the Minister of Railways whether services of several passenger trains and freight trains passing through Chhattisgarh under Bilaspur, Raipur DRM and Nagpur DRM office of Maharashtra have been put on hold for the last 3 years. He also asked details of funds allocated to Chhattisgarh by the government for upgradation, expansion, maintenance of existing rail routes and to introduce new trains, along with details of targets fixed and expenses made in this regard. माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा एक आदिवासी बहुल राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अनफॉर्चुनेटली एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे। आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं, काम भी हो रहा है और जो माननीय सांसद महोदय ने जो बहुत एक महत्वपूर्ण विषय रखा है उसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन्स थी 56 मेल एक्सप्रेस और 121 पैसेंजर ट्रेन्स होती थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है और 128 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। लेकिन इतने पे ही रुकने की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। छत्तीसगढ़ में आज करीब 37,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। 8 नए प्रोजेक्ट्स हैं, 8 नए लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे कि 1358 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1,373 किलोमीटर नए ट्रैक बिछेंगे। उस पर 16,604 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई जगह 3rd लाइन, कई जगह 4th लाइन। माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीसगढ़ की पोजीशन को देखें तो कोलकाता से मुंबई के जो ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से जाने वाली सारी की सारी ट्रेन्स छत्तीसगढ़ होते हुए जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए जो 10 साल पहले मात्र 311 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6,922 करोड़ यानी 22 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज दे रहे हैं और रिजल्ट भी उसका दिखाई दे रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले मात्र 6.5 किलोमीटर साल में, पूरे साल में छत्तीसगढ़ जैसा माननीय सांसद जी ने कहा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मात्र 6.5 किलोमीटर
1 साल में काम होता था। आज 100 किलोमीटर पर ईयर, यानी पहले से 15 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। एक मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी रखना चाहूँगा विषय कि रेलवे में जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो रेलवे के ट्रैक को, नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं तब ज़रूर गाड़ियाँ कैंसिलेशन की तकलीफ़ आती है। मैं उस तकलीफ़ के प्रति संवेदनशील हूँ और इसीलिए एक नया मेथड भी काम का स्टार्ट हुआ है। अभी पिछले 7-8 महीनों में इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत अभ्यास करके एक नया मेथड भी निकाला है जिससे कि मैक्सिमम काम जिसको NI वर्किंग कहते हैं, नॉन इंटरलॉक वर्किंग कहते हैं, उससे पहले हो जाए ताकि मिनिमम डिसरप्शन हो कनेक्शन के दौरान। Rajya Sabha member Dr. Bhim Singh asked the Minister of Cooperation the objective of the Nandini Sehkar scheme being run by the National Cooperative Development Corporation. The ministry in its reply informed the House that Nandini Sehkar scheme is a women-centric framework of financial assistance, project formulation, hand-holding and capacity development aimed at assisting women cooperatives to take up business model-based activities under the purview of NCDC. There is no minimum or maximum limit on financial assistance to projects by women cooperatives. Nandini Sehkar scheme was launched with the objective of aligning itself with the principles of Atmanirbhar Bharat outlined by Prime Minister Modi. The scheme is a framework of assistance to improve socio-economic status of women. It supports entrepreneurial dynamism of women through women cooperatives. It converges critical inputs of women's enterprise, business plan formulation, capacity development, credit and subsidy, and interest subvention of other schemes. The ministry also informed that as on 31st March 2024, NCDC has disbursed financial assistance to the tune of over 6,400 crore rupees for the development of cooperative societies exclusively promoted by women across the country. Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned and thanks for watching Sunset TV.